Good evening, students. Today we will discuss about the Microsoft Access. Microsoft Access गोटे बहुत important topic जोटा आमर एग्जाम पैटर्न रे ता देहरु बहुत गुडे क्वेश्चन आछी तो हमको Microsoft Access विषय रे प्रथमे क्लियर होबा दरकार काहेकि ना डाटाबेस ऊपर जदी क्लियर न होबा हमें अनेक गुडे क्वेश्चन रो सॉल्व करि परिबा नाही. So what is that Microsoft Access? Microsoft Access is relational database management system from the Microsoft. Microsoft Access टा होची गोटे relational database management application system बा RDBMS जोटा कहूचे हमें जोटा Microsoft कंपनी द्वारा डिजाइनिंग करा हिची. Microsoft Access रे हमें database को तैयारी करा जाए एवं database द्वारा हमें अनेक गुडे database रो ऑब्जेक्ट गुडा को मैनेजमेंट करिताउ. केही जने के बैकग्राउंड रो नॉइज आछी तो साइलेंट करो. तो Microsoft Access रे विशेष करी हमें रिलेशनल डाटाबेस रो तैयारी करिथौ. ताले डाटाबेस कहिले प्रथमे हम कोन बुझा जाय ना database is collection of information organized in such a way so as to make it easy to view, search and retrieve information as per our requirement. Database होची information मानकर एभली भाबे कलेक्शन बा database होची information मानकर एभली भाबे समाहार. database रे डाटा गुडा को एभली भाबे साजसज्जा हेई थाए जेमति कि हमको निर्दिष्ट गोटे डाटा को देखिबा सहज हुए, निर्दिष्ट गोटे डाटा को खोजी की पाइबा सहज हुए एवं डाटाबेस रो डाटार आवश्यक स्थले पुनरुद्धार करिबा मध्य सुविधा हुए. ताले डाटाबेस रे हमरो इंफॉर्मेशन गुडा को रहिबा द्वारा एटा कोन हेई थाए ना इट इज वेरी इजी, टाइमली एंड एफर्टलेस मैनर रे डाटा को एक्सट्रैक्ट करिवे अति सहज रे समय अनुसार एवं कम परिश्रम रे जोटा कोनती एफर्टलेस मैनर रे डाटा को हमें एक्सट्रैक्ट करि पारु. Activities that are routinely performed with a database include adding, editing, deleting, finding, sorting, querying and reporting information. Database रे डाटा गुडा को रहिबा द्वारा सहज रे नुवा डाटा ऐड हेई थाए, कोनोसी एक्जिस्टिंग डाटा को हमें चेंज करि पारु, कोनोसी अननेसेसरी डाटा को सहज रे डिलीट करि हि जाय. डाटा गुडा को हमें चाहिले गोटे स्वतंत्र प्रकार प्रिंटिंग फॉर्मेट रे भी बाहर करि पारु, डाटा गुडा को नै केबे केबे एनालिसिस भी करि पारु एवं फाइनली जदी डाटा गुडा को हमें चाहिबा ताकू निर्दिष्ट ऊपर गोटे रिपोर्ट तैयारी करी मध्य दे दे परिबा. ताले डाटाबेस रे डाटा गुडा को रहिबा द्वारा गोटे निर्दिष्ट स्थान रे रहिबा द्वारा ए सब काम गुडा को हमकु सुविधा हेतै. ताले डाटाबेस जानला पर वर्तमान जानिबा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोन. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होची गोटे कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर जहा द्वारा कि हमें डाटाबेस रो मैनेजमेंट करिथौ. एबो आरडीबीएमएस माने कोन ना आरडीबीएमएस अलाउज अस टू ग्रुप डाटा इनटू वन और मोर इंडिपेंडेंट टेबल्स. ताले आरडीबीएमएस होची एभली गोटे जिंस जहा कि हमकु डाटाबेस रे डाटा गुडा को ग्रुपिंग करिवा पई यूज करा जाय एवं अनेक गुडा डाटाबेस गुडा को एकाठी करी कि यूज करिवा पई अलाउ करे. मोर देन वन टेबल रो डाटा गुडा को एक्सेसिंग करिवा पई हमकु हेल्प करे. डाटाबेस रो केते गुडा कंपोनेंट्स थाए बा डाटाबेस रो केते गुडा मूल जिंस थाए जेमति कि टेबल, रिकॉर्ड, फील्ड, प्राइमरी की एंड सच अदर थिंग्स. ताले प्रथमे होची माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे इंफॉर्मेशन गुडा को स्टोर करिबा को हले जो ऑब्जेक्ट हमें यूज करू सेटा होची टेबल. खाली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नो जे कोनोसी डाटाबेस एप्लीकेशन रे डाटाबेस को मेंटेन करिबा को हले मूल जिंसडा निया जाय टेबल. एबो टेबल रे प्रति जो रो गुडा का आसे ताकू गोटे गोटे हमें रिकॉर्ड बोली कहू एबो प्रति कॉलम गुडा को जो आसे ताकू गोटे गोटे डाटाबेस भाषा फील्ड बोली कहंती. टेबल को अदरवाइज हमें रिलेशन बोली भी कहिथौ एंड रो गुडा को अदरवाइज हमें कोन कहिथौ ट्यूपल बोली भी कहिथौ एंड हमर कॉलम गुडा को अदरवाइज एट्रिब्यूट बोली भी कहै जे जेतेटा रो थाए ताकू हमें कार्डिनलिटी बोली कहू एंड जेतेटा कॉलम थाए ताकू हमें डिग्री बोली कहू एंड ईच value entered into that table is known as a data value or the smallest piece of meaningful information in a database. database रो सबठो छोटो माने थिबा बा अर्थ थिबा किछि जिंस ताकू गोटे गोटे डाटा आइटम्स बोली हमर कहै जे. जहा भी हो database रे केते गुडा जिंस हमकु सुनिबा को मिले रिपोर्ट, क्वेरी, फॉर्म, फिल्टर सच टाइप ऑफ थिंग्स. जहा भी हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे मोडे ओवरऑली जिंस तुमको किछि आईडिया देली. आज तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रो बेसिक जिंस नै कि आछि
तुमर साधारण जानिबा जिंस कहीं ना माइक्रोसॉफ्ट आसेस रो बहुत गुडा क्वेश्चन आसुची जोटा कि तुम ପାଇଁ डिफिकल्ट भी होची सॉल्व करिवा पई तो देखिबा जदी आज रो क्लास रो तुम बेसिक जिंसडा को क्लियर हे जाई तो भलो कथा नचित नेक्स्ट क्लास को मो माइक्रोसॉफ्ट आसेस रो आउरी एडवांस जिंस नै कि आसीबी तो फास्ट आमे जीवा वर्तमान आज रो एमसीक्यू को तुमर फर्स्ट क्वेश्चन आसुची a query is defined as option A, user can also change data in the database that fulfills the certain criteria. The output of the query is also displayed in the form of table. A query can also allow performing calculation on a different number of fields and all of these. Query ro को स्टेटमेंट टा अपन फुलफिलमेंट बा क्वेरी रो को स्टेटमेंट टा अपन अधिक ट्रू हेबो एनीवन केही कहि परिबो आरो आंसर कोटा हबो All of this. No, sir. Option C. Option C, sir. A query can also allow performing a calculation on a different number of fields सेटा ठीक भी अछि प्रथमटा भी किछि भूल नै सेकेंडटा भी किछि भूल नै तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस ए सबु किछि होछि क्वेरी पई ठीक आमे सबु किछि डाटा को चेंज करि परिबा एनालिसिस करि परिबा गोटे निर्दिष्ट सर्टन क्राइटेरिया माने कंडीशन बेसिस आमे कैलकुलेशन भी करि परिबा क्वेरी को नै कि ए सबु जिंसोडा को क्वेरी रे करि हबो तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट तो ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट MS Access represents Microsoft Access represents anyone? Option A. No, sir. Option C. Object-oriented model. Option? Option? Which option is right? Option C, sir. Option C. Object-oriented model. Object-oriented model कथा मु जमा ही किछि कहि नै. Option A, sir. Option A is the right answer. Relational database. Microsoft Access को relational database ପାଇଁ यूज करा जाय. जेमति SQL को भी यूज करा जाय. तो Microsoft Access भी सिंधु गोटे relational database ପାଇଁ ही यूज करा जाय. Next question. Which of the following represents the wizard of DBMS? एमानक भितरु कोउटा हमर wizard को represent करे database रे? All of this. बस तो क्वेरी को प्रिपरेशन कला बेले आमे All क्वेरी of this. हां ऑप्शन ए बी यूज हुए क्वेरी को तैयारी करिया पे क्वेरी विजार्ड रो यूज करा जाय देन असला फॉर्म को रिप्रेजेंट करिया पे फॉर्म विजार्ड रो यूटिलाइजेशन करा जाय टेबल गुडा को क्रिएशन करिया पे टेबल विजार्ड रो यूज करा जाय तो ऑल ऑफ दिस ए सब किछि हमर यूज करा जाय डाटाबेस रे कोनोसी जिंसो को रिप्रेजेंट करिवा पई बा विजार्ड रो डिजाइनिंग करिवा पई an actual data of database is sorted in गोटे database रे actually data गुडा को store हुए Option A, sir. Option B. option A Option B. means query Option B. option B means wizard an actual data of database is stored in कोटा राइट आंसर होबो an actual data of database is stored in actually जो डाटा डा हमें स्टोर करू database रे एमानक भितरु कोथरे स्टोर हुए क्वेरी विजार्ड फॉर्म Option B. Table, table. राइट आंसर टेबल रे हमर असेसर डाटा गुडा बैकग्राउंड रो किछि नॉइज आछि म्यूट करो तो हमर एक्चुअली टेबल द्वारा ही डाटाबेस रो सब जिंसोडा को मेंटेन करा जे जोटा कि मु तुमको प्रथम रो कहि आछि इन माइक्रोसॉफ्ट access we can store our information in an object that is known as table माइक्रोसॉफ्ट access रे जदी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करिवा पई कोनोसी ऑब्जेक्ट को व्यवहार करू सेटा होची टेबल नेक्स्ट each row in a table represents
डाटाबेस रे यूज करा जाउथिबा बा टेबुल रे यूज करा जाउथिबा रो गुडा को आमे कोन बोली कहू डाटाबेस भाषा रे ऑप्शन Sir, ए option D. ऑप्शन ए ऑप्शन ए टपल ऑप्शन ए टपल ए तो Record कहबा डाटाबेस रे यूज करा जाउथिबा प्रति रो गुडा को कोन बोली कहआ जाय टपल Record. बोली टपल हां Record. तो मु कहिची दैट इज द ट्यूपल टी यू पी एल ई तो टपल बोली तो किछ गोटे माने शब्द भी मु सुनि नै तेनु करी दैट इज नॉट राइट आंसर तो डाटाबेस रे प्रति रो गुडा को जहा रिप्रेजेंट करि थाए सेटा गोटे गोटे रेकॉर्ड कहंती अच्छा मु इट जस्ट के कहि दउची रेकॉर्ड मींस प्रति रो जेमति कि एठी रहिला तमरो फील्ड गोटा रहिची एंड गोटे सीरियल नंबर रहिची ता पाखकु ता ना रहिची ता पाखकु सपोज ता कोर्स नेम रहिची ता पाखकु ता रोल नंबर रहिची ताले एटा तमे कहि परिबो रो रे जोटा मेंटेन हला दैट इज द रिकॉर्ड डाटाबेस भाषा रे प्रति रो रे मेंटेन होतिबा जिंसटा को तमे गोटे रिकॉर्ड बोली कहबो ए रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स अनेक गोटे रिलेटेड फील्ड रो समार रे गोटे रिकॉर्ड तयारी हला ता माने से रोल नंबर रो रिलेशन अछि से नेम सहित से नेम रो रिलेशन अछि से कोर्स नेम सहित से कोर्स नेम रो रिलेशन अछि से रोल नंबर सहित ता माने मु गोटे निर्दिष्ट पिलार रोल नंबर जदी कहूची ता माने सेही पिलार समस्त रेकॉर्ड गुडा को मते मिली जाय परछि ता नाम भी मिली जाउची ता कोर्स नेम भी मिली जाउची ता सीरियल नंबर भी मिली जाउची तो रिलेटेड फील्ड रो समार रे जोटा तयारी करा जाय दैट इज द रिकॉर्ड ओके नेक्स्ट a column is divided into one row is called a column is divided into one row is called Option B. Relationship. option anyone B. Option B, sir. Relationship. relationship a column is divided into one row is called प्रति प्रति बैकग्राउंड रो किछि साउंड आछि Record. बैकग्राउंड रो किछि साउंड आछि तो म्यूट करो तो मु कहिबा कथा ए कॉलम इज डिवाइड इनटू वन रो इज कॉल्ड रो रे हमर जो रेकॉर्ड गुडा रो रे जो रेकॉर्ड गुडा का हमर एंट्री ही थाए तो प्रति रो रे जो रेकॉर्ड गुडा का हम एंट्री करी थाउ तो से कहबा कथा प्रति एंटायर रो कथा कहि नहीं ताकू डिवाइड करा जायते गोटे रो रु किछि पार्ट को हमको नबा को पड़े कॉलम जहा कि रो रो गोटे पार्ट को निया जायते तो ताकू हमें कोन बोली कहू ताकू एक्चुअली हमें फील्ड बोली कहू माने प्रति ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स ए फील्ड जेमति कि हमर सीरियल नंबर होला गोटे फील्ड माने तळकु हमें जेते जनकर रेकॉर्ड एंट्री करबा समस्त सीरियल नंबर उडा एंट्री करबा 1 2 3 4 5 एई बोली सेमति जेते जनकर नाम थिबो तळकु माने कोन नाम गुडा एंट्री करबा रोल नंबर तळकु रोल नंबर उडा एंट्री करबा दैट मींस ए फील्ड कैन कंटेन द लॉजिकल डाटा टाइप्स माने जो प्रकार डाटा कैरी आउट कहबा कथा नंबर दिया जिछि नंबर ही कैरी आउट करिवो टेक्स्ट दिया जिछि टेक्स्ट ही कैरी आउट करिवो ताले सेटा को ओटा हमें फील्ड बोली कहू नेक्स्ट which one is only used to display data एमान को भितरु कोटा डाटा को डिस्प्ले करिबा पई यूज करा जाय which one is the only used to display data एमान को भितरु कोटा डाटा को केवल डिस्प्ले करिबा पई यूज करा जाय Option D. None of these. ऑप्शन बी D, sir. None of these. ऑप्शन डी none of these which one is the only used to display data एमान को भितरु कोटा केवल डाटा को डिस्प्ले करिबा पई देखिया पई यूज करा जाय किछि भी हलानी आ भितरु नो ऑप्शन डी नुहे ए
एक्चुअली गोटे डाटाबेस रो डाटा को आमे जदि केबे प्रिंटिंग फॉर्मेट रे बाहर करबा को चाहूथिबा केवल देखि परिबा विभिन्न डिजाइन रे विभिन्न लेआउट नै कि आमे केवल देखि परिबा एंड ताको प्रिंटिंग भी करि परिबा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज द रिपोर्ट रिपोर्ट इज यूज्ड टू व्यू एंड प्रिंट डाटाबेस डाटा को देखिबा एंड ताको प्रिंट करिबा गोटे निर्दिष्ट उपाय रे ओके नेक्स्ट the statement that extracts specific information is called the statement that extracts specific information is called एमानको भितर कोटा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करे Option B. रिपोर्ट the statement that extracts specific information database रो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करे निर्दिष्ट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करे ऑप्शन डी रॉन्ग आंसर ऑप्शन डी नुहे ऑप्शन डी द टेबल क्षेत्र तो सब इंफॉर्मेशन मेंटेन हुए बट मोर क्वेश्चन अछि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ता को एक्सट्रैक्ट करा जाए द राइट आंसर इज क्वेरी क्वेरी इज यूज्ड टू व्यू चेंज एंड एनालाइज डाटाबेस डाटा क्वेरी को व्यवहार करा जाए देखिबा पाई भी चेंजिंग करिबा पाई भी एनालिसिस भी करिबा पाई डाटाबेस रो डाटा को हमें किछि निर्दिष्ट क्राइटेरिया रो एनालिसिस करि परिबा डाटाबेस को लेकी किछि हमें तर्जमा करि परिबा जे मते एई प्रकार डाटा दरकार ताले राइट आंसर होची क्वेरी नेक्स्ट at the following object the object is used to display data as well as to change the data of the database एमान भितर कोटा व्यवहार करा जाए डाटाबेस रो डाटा को देखिबा सहित भी चेंजिंग करिबा पाई anyone एमानको भितरु को से ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की व्यवहार करा जाए डाटाबेस रो डाटा को देखिबा सहित हमें चेंज भी करि परिबा डाटा गुडा को एनीवन ऑप्शन ए तो नुह कहीं मु ऑलरेडी गुडाए कांसेप्ट बुझे सारानी ऑप्शन ए तो केबे भी होबो नहीं डाटाबेस रो डाटा को देखिबा सहित चेंजिंग भी करी हुए बी इज द राइट आंसर बी इज द राइट आंसर फॉर्म इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई डाटा एंट्री वर्क्स हमरो हमें जानिले डाटाबेस रे बहुत गुडा टेबल रे डाटा गुडा का एंट्री हिथाय बट आमे जतबे चाहू जे एका समय रे गोटे जगह रे केमती आमे डाटा को अपडेट करिबा एंड जतेटा टेबल डाटाबेस रे अछि से सबु थिरे से डाटा गुडा को अपडेट हे जिवो तो सेटा गोटे सुइटेबल हुए आसेस राम पई अछि जोटा कि फॉर्म आमे जदि गोटे फॉर्म रो डिजाइनिंग कर देबा जतिटा टेबल अछि बा जतिटा टेबल रे असाइनमेंट कराई छि फील्ड गुडा को ताहले हमर कोन हे जिवो ना सी जो फॉर्म माध्यम रे आमे डाटा एंट्री कामटा को सिंप्लीफाई करि परिबा बा डाटा एंट्री काम को सिंपल वे रे करि परिबा जहा फल रे कि आमे जतरा डाटा एंट्री करि कि तिके रिफ्रेश मारि दबा ऑटोमेटिकली जो डाटा गुडा का आमे फॉर्म माध्यम रे अपडेट करथिबा ना से सबु टेबल रे अपडेट हे जाइथिबो जो फील्ड गुडा का आमे नैथिबा ओके नेक्स्ट फॉर्म इज द राइट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट the following objects used to retrieve data from the database एमानक भितरु को ऑब्जेक्ट डाटाबेस रो डाटा को रिट्राइव करिबा पई पुनरुद्धार करिबा पई हमकु हेल्प करे Option C. D. B and C. ऑप्शन डी ऑप्शन ए ऑप्शन डी कोटा राइट आंसर B हबो And D ऑप्शन हबो बी B and C both. बी और डी कोटा राइट आंसर Sir, option D.
ऑप्शन बी इटा नहीं both option B and C both. both B and C. अच्छा following objects used to retrieve data from the database. एमानक भितर को ऑब्जेक्ट ता व्यवहार करा जाए जहा कि डाटाबेस रो डाटा को कोन करथे रिट्राइव करथे पुनरुद्धार करथे ताले एठी गोटे ऑप्शन आसिला देछि तमरो अनुसार तमे कहउछो बी एंड सी sorting record of the database रो डाटा गुडा को हमें sorting करिबा आइदर अल्फाबेटिकली वे रे बा न्यूमेरिकली वे रे ascending order रे बा डिसेंडिंग ऑर्डर रे बड़ छोट क्रम रे बा छोट रे बड़ क्रम रे ठीक अछि से भी निर्दिष्ट उपरे डाटा गुडा रिट्राइव करे पुनरुद्धार करी फिल्टरिंग रेकॉर्ड्स ऑफ द डाटाबेस आमे गोटे डाटाबेस रु निर्दिष्ट भाबे डाटा को किछि फिल्टर करिबा को चाहूचे माने मते पर्टिकुलरली एई ना रो रेकॉर्ड गुडा को देखिबा दरकार अछि फिल्टर माध्यम रे कर दै परिबे ना सेटा बी ना सेटा ए हबो ना सेटा सी हबो तेनु करी जेहेतु बोथ बी एंड सी रे ए जिंस करी होउची सो बोथ बी एंड सी मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट बा में select from the following which is not a type of relationship that can be applied in access database एमानक भितरु कोटा रिलेशनशिप माने रूपे व्यवहार करा जाए नाही access one to many one to one many to many all of the above can be applied कोटा right answer हो के आर ओडे बैकग्राउंड रे नॉइज आछी काइंडली टिके म्यूट करिवे Option D all of above can be applied. all of the above can be applied किछि ओडे डाटाबेस रे 1 to 1 किछि ओडे अछि अछि कि सेमति किछि Option C over many to many. many to many जहां से कहले लास्ट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव कैन बी अप्लाइड डाटाबेस रे हमें जो रिलेशनशिप रखू सेटा 1 to 1 रिलेशनशिप भी रुहे 1 to many रिलेशनशिप भी रुहे many to 1 भी रिलेशनशिप रुहे many to many रिलेशनशिप भी रुहे माने गोटे डाटाबेस रो जदी गोटे फील्ड सहित आउ गोटे फाइल रो जदी आउ गोटे फील्ड सहित रिलेशनशिप रुहे गोटे गोटे फील्ड रो ताको कहंदी 1 to 1 रिलेशनशिप जदी गोटे फील्ड रो आउ गोटे फाइल रो अनेक गुडे फील्ड सहित रिलेशनशिप रुहे ताको कहंदी 1 to many रिलेशनशिप सेमति गोटे डाटाबेस रो अनेक गुडे फील्ड रो जदी गोटे फील्ड सहित आउ रिलेशनशिप रुहे ताको कहंदी many to one रिलेशनशिप सेमति अनेक गुडे फील्ड रो अनेक गुडे फील्ड सहित जदी रिलेशनशिप रुहे ताको कहंदी many to many रिलेशनशिप ताले से कहिबा कथा एमानको भितरु कोउटा गोटे रिलेशनशिप नुह एमानको भितरु समते होसंदी गोटे गोटे रिलेशनशिप तेनु करी ऑल ऑफ द अबव कैन बी अप्लाइड option D is the right answer. Okay, next question. Select the data type is used to store logical values in Microsoft Access. Option D. Option B, on off. Option D. Option D, all of the above. जितोले हमें आंसर दबा तो इते क्विकली दबा भी निहाती दरकार नहीं काहे कि ना मु तुमको कहि जायछि सब क्लास रे जे 100 क्वेश्चंस हमको मिलुची एंड हमको 60 मिनिट मिलुची 60 मिनिट मिलुची 100 टा क्वेश्चन को करिवा पई तो इते भी व्यस्त होबा दरकार नहीं गोटे क्वेश्चन पई अप्रोक्सीमेटली 37 रु 38 सेकंड नेले भी चलिबो काहे कि ना माइनस मार्किंग के हमर करिवार नहीं काहे ना जदी भूल आंसर दोचे माइनस मार्किंग हो तो इते रिलीफ दबानी टिके भी चिंता करिबा Sir, true and false. all of the above option D ना कोटा Sir, option C. option C true or false माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे एक्चुअली मते लागुची टिके टिके देखिछ बोधे कि करिछ बा मोटे देखि ना हो एंती मते लागुची माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे एक्चुअली एमिति किछि डाटा टाइप नाही ऑन ऑफ किछि नाही ट्रू फॉल्स भी नाही एस और नो गोटे अछि ताकू लॉजिकल डाटा टाइप बोली कहंती दैट कैन बी टेक आइदर वन ऑफ टू वैल्यूज दीटा वैल्यू भितरु कोनोसी गोटे वैल्यू से नै पारे हां आमे चाहिले ऑन ऑफ सेटिंग करि परिबा ट्रू फॉल्स सेटिंग करि परिबा
जहाँ भी गोटे सेटिंग करि परिबा बट डाटा टाइप से पचारिछि तो डाटा टाइप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे मुख्यतः कोन डाटा टाइप गुडा अछि मु तुमको कहि दूची प्रथमे अछि गोटे ऑटो नंबर नेक्स्ट रे अछि गोटे लॉन्ग टेक्स्ट जोटा को अदरवाइज मेमो बोली कहंती गोटे अछि शॉर्ट टेक्स्ट जोटा को टेक्स्ट बोली कहंती पुराना वर्जन मानकरे गोटे अछि करेंसी गोटे अछि तमरो एस और नो गोटे अछि ओएलई ऑब्जेक्ट गोटे अछि हाइपरलिंक गोटे अछि लुकअप विजार्ड एंड आउट रहला ऑटो नंबर एई भली किछि डाटा टाइप अछि तो एस और नो इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट The lookup wizard in Microsoft Access used for what? Lookup wizard को Microsoft Access रे कौन ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? Dear students, ମୁଁ again and again कहूची क्वेश्चन गुडाक Microsoft Access रो बहुत गुडाए आसुची एबे एग्जाम मानकरे आगुरो आसुनथिला एते तेनुकरी मु ता ऊपर आज फोकस करिकि किछि प्रिपेयर करिछि तो Microsoft Access टिके निहाती भाबे जानिबा दरकार भलो भाबे टिके बुझिबा दरकार तथापि मु आज बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन भी नहीं पूरा जनरल क्वेश्चन आज नहीं Option B ओके to select value from Excel sheet. ऑप्शन बी टू सिलेक्ट द वैल्यूज फ्रॉम एक्सेल शीट लुकअप विजार्ड सॉरी सेटा नुह No option A हबो ऑप्शन ए हबो माने कंफर्म भी नुह टू सिलेक्ट वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल इज Sir, दैट इज A द राइट हबो। आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर लुकअप विजार्ड को हमको व्यवहार करा जाए जेतेबेले आउ गोटे टेबल रु आमे किछि डाटा को चूज करबा को चाहूतिबा द साइज एज द सेम साइज एज द लुकअप फील्ड माने धरि नियो गोटे टेबल रे आमे स्टूडेंट्स नेम गुडा का एंट्री करिछि एंड अगेन से नेम गुडा को हमको आउ गोटे टेबल रे भी एंट्री करिवार अछि ताले से जो स्टूडेंट्स नेम ता प्रीवियस टेबल रे एंट्री हेतिला हमको आरो टेबल रे सेटिंग कला बेले को आउ टेक्स्ट डाटा टाइप नबा दरकार नै लुकअप विजार्ड माध्यम रे नै कि से प्रीवियस टेबल रो स्टूडेंट नेम सहित आमे रिलेशनशिप रखि परिबा दैट कैन बी डिफाइंड बाय सम विजार्ड्स सब किछि विजार्ड्स आसीबो डायलॉग बॉक्स माध्यम रे आमे सेटा सेटिंग कर दबा एंड जेतले आमे से टेबल रे डाटा गुडा के एंट्री करिबा आ मैनुअली हमको ना गुडा के एंट्री करिबा को पड़िबा नै गोटे कॉम्बो बॉक्स माध्यम रे लिस्ट आकार आसीबो कॉम्बो बॉक्स माने बुझी पारुथिबो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड लिस्ट बॉक्स आमे जेतले क्लिक कर दबा लिस्ट आकार से ना गुडा के जहा एंट्री थिबो पूर्व टेबल रे सब पळे आसीबो आमे आराम से एंट्री करि परिबा तो लुकअप विजार्ड को विशेष करी गोटे टेबल को रिलेशनशिप समय रे बा गोटे अनदर टेबल डाटा को चूज करबा समय रे यूज करा जाय सेम साइज एल द लुकअप फील्ड जहां पूर्व रे सेटिंग करथिबो तार भी सेम साइज रहिबो लुकअप फील्ड रे ओके नेक्स्ट सिलेक्ट द टर्म व्हिच इज यूज्ड टू गेट डाटा फ्रॉम यूजर एमानको भितरु कोटा हमरो यूजर थारो डाटा कलेक्ट करिया पे यूज करा जाय Sir, option C. वेरी मु अगेन एंड अगेन कहूची एते व्यस्त हवा भी नुह टिके भाबिबा काइना ऑलरेडी हमें यदि क्लिक करि दबा बा ओएमआर बेस वाला थिबो ऑलरेडी माइनस मार्किंग हे जिवो Option C. ऑप्शन सी क्वेरी सिलेक्ट द टर्म व्हिच इज यूज्ड टू गेट डाटा फ्रॉम यूजर एमानको भितरु कोटा यूजर Option थारो डाटा ऑप्शन D sir हबो report. रिपोर्ट तामाने मु सबु करबी ना क्वेरी भी नेबी रिपोर्ट भी नेबी सबु भी नेबी बट टर्म टा टिके बुझिबा सिलेक्ट द टर्म व्हिच इज यूज्ड टू गेट डाटा फ्रॉम यूजर एमानको भितरु कोटा यूजर थारो डाटा नबा पई यूज करा जाय मु तुमको कहितली रिपोर्ट ता हला डाटाबेस रो डाटा को प्रिंटिंग फॉर्मेट रे देखिया पई गोटे निर्दिष्ट ऊपर डिजाइनिंग करके देखिबा पई यूज करा जाय आउ तमे जो कहलो क्वेरी क्वेरी के तो डाटाबेस रो डाटा को एनालिसिस करिया पई यूज करा जाय सी किंतु कहिछि जे एमानको भितरु कोटा डाटा गेट करिवो माने डाटाटा नबो तो फॉर्म इज द Form राइट आंसर फॉर्म इज द राइट option. आंसर हां बस ऑप्शन Sir, ए फॉर्म इज द राइट आंसर फॉर्म माध्यम रे हमें डाटा एंट्री काम सिंपलीफाई करि पारू ओके फॉर्म इज यूज्ड टू सिंपलीफाई द डाटा एंट्री वर्क्स डाटा एंट्री काम को जदी सिंपलीफाई करिबा डाटा एंट्री काम को जदी सहज रे करिबा को चाहूतिबा ताले सेति पय हमको फॉर्म ही हेल्पफुल होबो नेक्स्ट सिलेक्ट द इनवैलिड फील्ड नेम एक्चुअली एमानको भितरु कोटा गोटे माने फील्ड नेम एमती सेटिंग करा जाय नाही बा असेस रे एमती नाम दिया जाय नाही
Option A, option B, option C, option D. Which is the right answer? Option B, sir. Option B. Option A, option B. माने सबो मु लिखिबी ना. The right answer is option C. ऑप्शन सी स्टूडेंट डॉट एड्रेस एमिति दिया जाए नहीं. हाँ, जो स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर एड्रेस एमिति दिया जाए कहीं ना ब्लैंक स्पेस तो अलाउ करा जाए भी बट एटा वैलिड भी हेई परिबो. स्टूडेंट एड्रेस भी हमें देई परिबा, स्टूडेंट्स एड्रेस एमिति भी देई परिबा और स्टूडेंट डॉट एड्रेस देला बेले से आउ निए नहीं कहीं ना से कहितला जदी कोनसी स्पेशल सिंबल हमें यूज करिबा दैट स्पेशल सिंबल इज ओनली अंडरस्कोर. Clear? Next, who is define primary? Sorry, the answer ta kon? Answer is the option C, student dot address. Next, who is define primary key is? एमान को भितर कोटा प्राइमरी की पाई प्रयोज्य बा कोटा प्राइमरी की को ही बुझाए. डाटाबेस रे हमें सुनिथिबा जदि भी न सुनिछि म कहि दोछि डाटाबेस रे मुख्यतः एई सब की गुडा का नाम विषय सुनिबा को मिले. प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, कंपोजिट की, सुपर की एंड अल्टरनेट की एई बली छटा की रो नाम सुनिया को मिले. ताले से मु कहिबा कथा व्हिच डिफाइन प्राइमरी कीज. प्राइमरी कीटा एमान को भितर कोटा को बुझाए. Option A. Option A, auto number is the example of a primary key. Confirm. A is confirm. Confirm. But Sir, the right answer is your option B, uniquely identify each record. मु जस्ट ये कहि दोचे प्राइमरी की विषय रे. Primary keys perform the unique identification function in the relational model. Thus, a null primary key value within a base relation would be like to saying that there was some entity that had a no known identity. ताले प्राइमरी की माने होची कोन ना जहा की यूनिकली आइडेंटिफिकेशन प्ले करे गोटे रिलेशनल मॉडल क्षेत्र रे. जदी डाटाबेस रे कोनोसी जगह रे कोनोसी फील्ड पाई भी प्राइमरी की न दिया जाईची से डाटाबेस रे से डाटा रो कोनोसी एंटिटी बा अस्तित्व अछि बोली धरि निया जाय नाही. तेनु करी हमको निश्चित भाबे डाटाबेस रे गोटे प्राइमरी की असाइनमेंट करिवा को पड़े. तो प्राइमरी की रो काम मुख्यतः हला यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड. क्लियर मो कथा? कोन? Option B is the right answer. Uniquely identify each record. Sir, आज रो टॉपिक कोन? Definition. Example दियंतु. Anyone? जणे को. आज रो टॉपिक कोन? Primary key. आज रो टॉपिक कोन? Identify माने कोन? Again, question. ଆଜିର ଟପିକ କଣ? Ajiro topic is MS Access, Microsoft Access. Okay. ଆପଣ Next. ଆଉରେ एग्जांपल ଦିଅନ୍ତୁ ଏ क्वेश्चन ର. Next. Because Microsoft Access is a very vital part and question बहुत उड़ाई आसुची. हमको निहाती भाबे एडा को क्लियर रहबा दरकार एंड दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस. माने मु आज जो माइक्रोसॉफ्ट एसेस रो क्वेश्चन नै छी पूरा सिंपल क्वेश्चन आउट टिके एडवांस बा आउट के क्रिटिकल वे रे भी क्वेश्चन उडा का आसुची. एबे जो एग्जाम हेतिला ओएसएससी रो तमे देखि परिबो टिके क्रिटिकल वे रे भी आउट ये क्वेश्चन आसुची. ओके 17 क्वेश्चन देखो. सिलेक्ट द डाटा टाइप दैट इज नॉट वैलिड इन एमएस एसेस. एमान को भितरु कोटा माइक्रोसॉफ्ट एसेस रो डाटा टाइप पई वैलिड नुहो. ऑप्शन बी पिक्चर. ऑप्शन बी पिक्चर राइट आंसर. ऑप्शन बी पिक्चर दा नाही काहे ना ऑलरेडी मु एबे जस्ट टिके आगुर कहउतली माइक्रोसॉफ्ट एसेस रे हमें जो डाटा टाइप विषय रे सुनु सेटा ला ऑटो नंबर, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, करेंसी, एसनो, लुकअप विजार्ड, देन आफ्टर ओएलई ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक्स. किंतु पिक्चर बोली किछि ओटा डाटा टाइप नाही एसेस रे. ओके नेक्स्ट. Which data type used to store large text and numbers? एमान को भितर कोटा लार्ज टेक्स्ट
को एंट्री करबा पई यूज करा जाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे बा को प्रकार डाटा टाइप को हमें सेटिंग कले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे हमें लार्ज टेक्स्ट गुडा को एंट्री करि परियो ऑप्शन डी ऑप्शन डी लार्ज टेक्स्ट किछि नाही रे लॉन्ग टेक्स्ट अछि लार्ज टेक्स्ट किछि नाही सर ऑप्शन बी नहीं हबो ओनली ऑप्शन टेक्स्ट बी टेक्स्ट नो टेक्स्ट होची शॉर्ट टेक्स्ट माने छोटो टेक्स्ट option the right answer is memo can be used to entry the lengthy text memo is a such type of data type which can store combination of text and numbers लिखा भी नहीं परिबो नंबर भी मिसई के नहीं परिबो but that numbers cannot be calculated as mathematical calculations से नंबर उडा को नहीं तमे कोनसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करि परिबो नाही एंड तार मैक्सिमम साइज होची 64000 कैरेक्टर्स 64000 पर्यंत अक्षर तमे मेमो फील्ड रे एंट्री करि परिबो and the memo data type is suitable for entering remarks comments notes ए टाइप रो जिंस पे यूज करा जाय ओके नेक्स्ट को हमें जिबा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑटो नंबर डाटा टाइप यूज्ड फॉर व्हाट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे ऑटो नंबर डाटा टाइप को हमें काहे यूज करू ऑप्शन डी सर कैन बी एडिटेड ऑप्शन बी कैन बी रैंडम डी सर cannot ऑप्शन be डी edited cannot be edited can be edited ऑप्शन डी नो ऑटो नंबर विषय में कहि दोछि टिके ऑटो नंबर सिलेक्टिंग ऑटो नंबर डाटा टाइप इन ए फील्ड a user cannot be enter any data into that field user कौन सी डाटा एंट्री करि परिबो नाही that automatically appears when a new record is added जेतेबेले गोटे नुवा रेकॉर्ड ऐड हबो आपे आपे से आसीबो सेति पई तो से फील्ड ना होची ऑटो नंबर ताले ऑप्शन ए टा भी ठीक आंसर कैन बी सीक्वेंशियल धारावाहिक भाबे आसीबो 1 तापर नेक्स्ट रेकॉर्ड ऐड कला को 2 तापर नेक्स्ट रेकॉर्ड ऐड कला को 3 और रैंडम भी ही पारे रैंडम और यूनिक नंबर्स सेमति भी ही पारे ताले ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओनली ए एंड बी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आसेसटा बहुत डिफिकल्ट लागुची ना कि बेसिक टा हाँ आसेस तो निश्चित भाव गोटे डिफिकल्ट टॉपिक एक्सेल ठारू भी से बहुत डिफिकल्ट एंड बुझिला बोली जिंस गुडा अछि ओके मु ट्राई करिवि नेक्स्ट को तार बेसिक कांसेप्ट गुडा तुम क्लारिफाई करिया पई मु आज भी जो क्वेश्चन सेट करि तुम बेसिक क्वेश्चन गुडा इते एडवांस क्वेश्चन भी नहीं नहीं बट टॉपिक गुडा तुम जेहेतु टिके क्लियर होई पारि ना सेति पे आंसर गुडा करिया पई तुम कष्ट लागुची ओके मु नेक्स्ट को तार टॉपिक गुडा को नेकी तुम पई आसीबी ओके select the data type that allow you alphanumeric characters and special symbols एमानको भितरु कोटा डाटा टाइप आमे नेले alphanumeric characters और special symbols गुडा को नहीं परिबा anyone both A and B both A B and option B both A and B ये तो हबनी ये तो ऑटो नंबर फील्ड रे तो आमी किछि एंट्री यूजर किछि एडिटिंग करि पारे नै कंट्रोल्स कैन नॉट बी एडिटेड बाय द यूजर रो कंट्रोल किछि नाही ऑटो नंबर फील्ड पई टेक्स्ट होना को alphanumeric characters and special symbols text option C is the right answer text is the right answer okay next 21 the category of information is known as in a database table रे जो कैटेगरी रो बा निर्दिष्ट उपाय रे बा निर्दिष्ट रूप रे जो डाटा गुडा को नै थाए टेबल सी जो कैटेगरी टा कोन बोली कहै छै डाटाबेस भाषा रे yes sir field राइट ताको फील्ड बोली कहंदी बस ठीक फील्ड मींस इट इज द स्मॉलेस्ट piece of the meaningful way to represent an information in a database ताले फील्ड माने जदी सपोज आमे सेटा न्यूमेरिक फील्ड नैचे ताले सेथरे केवल नंबर ही एंट्री करि परिबा आउ टेक्स्ट एंट्री को लागु से नबो नाही तो जदी डेट एंड टाइम नैचे तो डेट एंड टाइम ही एंट्री करिबा आउ किछ एंट्री को लागु से नबो नाही ताले फील्ड होची सेही बोली जिंस बा सेही बोली जिंस जहा कि निर्दिष्ट कैटेगरी रो इंफॉर्मेशन नै थाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन
where can you find relationship command आमर database रे preparation कला बेले relationship टा होचे important जिंस that can be put relation between the tables तो से जो relationship command टा थाए सेटा हमको कोठी मिले आशीष रो anyone Option C. option C external data tab Microsoft Access रे किछि D है वो नाही D. Let option them. option option C D कोटा confirm D. Option B, option sir. option D create tab D. create बोली नहीं सर, किछि ओरे database tab ही हम. जस्ट टिके वेट क्रिएट बोली टैब ही किछि न थाए डाटाबेस को आमे जब होम माने ऑफिस बटन को जाई कि डाटाबेस को तैयारी करू सेते बेले ही न्यू को गला पर क्रिएट आसे तो क्रिएट बोली टैब ही किछि नाही राइट आंसर इज डाटाबेस टैब रे ही रिलेशनशिप बोली ओटे कमांड अछि ओके तो से रिलेशनशिप कमांड मारि देले आमे डाटाबेस भीतर को टेबल रो रिलेशनशिप को फील्ड सहित रखिचे सोडा को सब शो कर जाय ओके क्लियर नेक्स्ट जिबा what is the maximum characters a field name can contain in Microsoft Access Microsoft Access रे maximum गोटे field ना देला बळे कितटा अक्षर देई परिबा 64. Option B. option B 34 characters नहीं सर, 64. 64 हमको गूगल हेल्प करूची की 64 ही right answer. मत लागुची गूगल टिके हेल्प करूची हो ठीक अछि 64 होची राइट आंसर ऑप्शन डी होची राइट आंसर तो मैक्सिमम गोटे फील्ड नेम आमे क्रिएशन कला बेले 64 टा पर्यंत अक्षर एंट्री कर दे परिबा ताठो बड़ बा ताठो आ अधिक अक्षर आमे नै परिबा नाही क्लियर नेक्स्ट जिबा select the way in which you define a field and when entering data for that field it will display asterisk marks instead of actual type text एमानको भितर कोटा हमरो यूज करा जाए जोटा कि आमे जेतरे टेक्स्ट गुडा लिखि थाउ से टेक्स्ट गुडा देखा जाएनी बरो पासवर्ड फील्ड भलिया सेडा सब तक asterisk mark रे पड़ी जाए Indexed. Option A. indexed Indexed. option A indexed option 2 validation rule option C input mask and option D IME mode नहीं सर, option A is right answer. option A indexed भाबुची ऑप्शन ए टा नुह केमती नुहे validation rule. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मो एठी जस्ट टिके कहि दोची आमे जेतबे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे कोनोसी डाटा टाइप गुडा को चूज करू से डाटा टाइप गुडा को आउ टिके अधिक माने डिफाइन करिवा पई अधिक एक्यूरेट करिवा पई हमर किछि फील्ड प्रॉपर्टीज निया जाय ताले से फील्ड प्रॉपर्टीज भीतर बहुत जिंस आसे जेमति कि तमरा वैलिडेशन रूल वैलिडेशन टेक्स्ट फॉर्मेट देन होची इनपुट मार्क्स देन होची डिफॉल्ट वैल्यूज देन होची तमरा आ कोन आस्ते तमरो जोटा कहता इंडेक्स्ड हां तो एई टाइप रो सब जिंस जोडा का आसी थाए ताले मोर क्वेश्चन थिला जे को फील्ड प्रॉपर्टी रे हमर कैरेक्टर गुडा का एग्जैक्टली डिस्प्ले हुए नाही जहां फील्ड पई दिया जाय बरो सेटा हम पासवर्ड फील्ड भले आस्ट्रिक मार्क रे पड़ी जाय ताले इनपुट मार्क्स रे हमें जहां दबा जो फील्ड पई से फील्ड रो डाटा टाइप गुडा का विजिबल होबो नाही इंस्टेड ऑफ द कैरेक्टर्स देयर आर आस्ट्रिक मार्क्स विल बी विजिबल सेठी आस्ट्रिक मार्क ही देखा जिवो जेमती फॉर्मेट रे हमें प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं परियो बहुत उडे फॉर्मेट अछि डेट नै छे डेट पई मास दिन मास वर्ष दिन मास दिन सहित आउ माने किछि इयर जेमती हमें नउचे अमुक जुलाई इयर होचे या ए टाइप रो इन फॉर्मेट रे सेटिंग करा जाय जहां भी हो ठीक टेक्निकल टॉपिक दिस इज ओके which key can be used to switch between the field names and the properties panel in table design view आमे जेतबे डाटा टाइप मेंशन करिबा डाटा टाइप मेंशन कला पर हमको किछ फील्ड प्रॉपर्टीज भी सेटिंग करिबा को पड़िबो
ताले से जो आमे जेतरा डिजाइन व्यू रे डिजाइनिंग करूथिबा तमर जो फील्ड नेम गुडा कोनबा एंड तादिर डाटा टाइप गुडा का आमे सेटिंग करिबा डाटा टाइप सेटिंग कला पर से डाटा टाइप को कहली आउ टिके एलाबोरेट करिवा पई फील्ड प्रॉपर्टी गुडा का सेटिंग करा जाय ताले से फील्ड प्रॉपर्टी रो डाटा टाइप को पुनी डाटा टाइप रो फील्ड प्रॉपर्टी को मूवमेंट करिवा पई एमिता आमे मैनुअली माउस बा कीबोर्ड रे यूज करि परिबा बट जदि शॉर्टकट की रो स्पेशली कीबोर्ड रे यूज करिबा वो कीटा यूज करिबा Option C F5. ऑप्शन Sir F5. ऑप्शन सी F5 Yes. 6 ऑप्शन सी F6 मते लगुची मु कहिदिली बोली तमे ह मार दोछ ऑप्शन सी टा नुह F5 नुह ऑप्शन ए F6 इज द राइट आंसर आमे जदि F6 मारी मारी जिबा ताले फील्ड रो जाउथबा डाटा टाइप रो पुनी आस्तबा फील्ड प्रॉपर्टी को आमे जहा एमदी ता भीतर नेविगेशन करि परिबा ओके नेक्स्ट को जिबा आमे ये सब आंसर गुडा को नोट डाउन भी करके रखो आई थिंक इट इज बेटर तुमको बहुत हेल्प करिवो ये सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटा टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट एमानको भितरु कोटा डाटाबेस रो ऑब्जेक्ट नुह बा डाटाबेस रे एमती किछि जिंस नाही Option B, sir. भलो भाबे टिके चिंता करो Sir, ଭଲ ଅଛି option B. ऑप्शन बी पूरा कंफर्म लॉक Option करा B. हबो लॉक करा हबो इटा मॉड्यूल्स काई टिके अनथ्रेड लागिला बोली कि वाटा ऑप्शन बी नुह ऑप्शन बी मॉड्यूल्स अछि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे मॉड्यूल्स अवेलेबल अछि टेबल अवेलेबल अछि फॉर्म भी अवेलेबल अछि सो वर्कशीट ता किछि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे नाही वर्कशीट कथा आसे कोथिरे एक्सेल रे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे वर्कशीट बोली किछि गोटा ऑब्जेक्ट नाही क्लियर नेक्स्ट सिलेक्ट द फील्ड दैट हैज विड्थ 8 बाइट्स को फील्ड रो फील्ड साइज ता होची 8 बाइट्स by in which field we can enter 8 bytes data Option B, hyperlink. option C, sir, hyperlink. option C number B. option C number टिके चिंता करिबा ऑप्शन सी तो नुह Option B, sir, हबो. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर डेट एंड टाइम मींस दीटा मास दीटा वर्ष एवं दीटा दिन ये ला 6टा मझिरे हाइफेन बा दीटा स्लैश तमे यूज करि परिबो एमते हेकी 8टा क्लियर मो कथा नेक्स्ट व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए टेक्स्ट फील्ड कैन बी गोटे जो आमे असेस रो डाटा टाइप गुडा को नउचे से डाटा टाइप रे गोटे अछि टेक्स्ट फील्ड से टेक्स्ट फील्ड रे मैक्सिमम तार लेंथ केते Sir, option A, 75. ऑप्शन ए 75 255 सबुठु छोट लागिला सेटा तुमको माने नेग्लिजिबल लागिला बुद्धि सेट पे कहलो हो नै कि 75 नुह 75 नुह मैक्सिमम टेक्स्ट फील्ड रो साइज होची 255 255 टा पर्यंत अक्षर तमे एंट्री करि परिबो क्लियर मो कथा आमे चाहिले आहुरी फील्ड साइज को सेटिंग करि परिबा बा बढ़े देई परिबा ताले हमर राइट आंसर होची कोटा 255 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्लियर Clear, sir. नेक्स्ट which tool do you use to create a query object एमानको भितर कोटा में व्यवहार करिबा गोटे क्वेरी ऑब्जेक्ट करिबा पई एनीवन Database was option D. D, sir. option ऑप्शन ए D सी डी कोटा राइट आंसर D हबो D. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सिंपल क्वेरी विजार्ड माध्यम रे हमें क्वेरी ही तयारी करि परिबा नेक्स्ट database access levels are specified so as to define who can access what is in database it is identified through
डाटाबेस रो एक्सेस करबा कोले एमान को हमको मेंशन करबा को पड़िबो कि एक्सेसिंग करबो ताले सेति पई एमान को भितर कोटा गुरुत्वपूर्ण बा कोटा मेजर रोल प्ले करे ऑप्शन बी पासवर्ड नहीं सर ये ऑप्शन बता बी ऑप्शन ऑल डी ऑफ डी द अबव ऑप्शन बी यस नो नहीं ऑप्शन बी पासवर्ड कथा पर कथा बट मेजर रोल वाला यूजर आईडी न देले पासवर्ड कहा पई दबो तो डाटाबेस को गोटे एक्सेस करबा कोले डाटाबेस को गोटे ओपन करबा कोले यूजर आईडी हला मूल जिंस यूजर आईडी पर ही पासवर्ड कथा आसो ऑप्शन ए यूजर आईडी इज द मेजर थिंग नेक्स्ट this form displays multiple records one per row in the form window एमान को भितर कोटा हमर मल्टीपल रिकॉर्ड देखाए जेतेबेले आमे कोनोसी डिजाइन व्यू रे देखू तो मल्टीपल रिकॉर्ड गुडा का एका समय रे देखिबो केमती वन पर रो गोटे गोटे रो रे गोटे गोटे रिकॉर्ड ताले एमान को भितर कोटा सेटा सुइटेबल होय ऑप्शन बी सर ऑप्शन डी डाटा शीट व्यू राइट आंसर डाटा शीट व्यू रे गोटे गोटे समय रे गोटे गोटे रिकॉर्ड पूरा देखिबो नेक्स्ट the columns in a Microsoft Access table are called as the columns in a Microsoft Access table are called as मैं बहुत थोड़ा भी कहि सारलनी एटा कॉलम हां अगेन फील्ड सर ऑप्शन ए फील्ड इज द राइट आंसर कॉलम टा को ही फील्ड बोली कहा जाए ओके नेक्स्ट a part of database that stores complete information about an entity such as employee sales orders एमान भितर कोटा राइट आंसर होबो ऑप्शन बी फाइल ऑप्शन बी सर ऑप्शन बी फाइल यस से कहि छी जे ए पार्ट ऑफ डाटाबेस पूरा पूरी नुहे डाटाबेस रो गोटे पार्ट जहा कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर करे गोटे एंटिटी माने जोटा कहूचे गोटे अस्तित्व बा गोटे जिंसर रिकॉर्ड संबंधी सच एज एम्प्लॉई रहू बा सेल्स रिलेटेड हो बा ऑर्डर रिलेटेड हो सेटा गोटे कोन बोली कहंती सेटा गोटे सेटा को ऑप्शन ए गोटे रिकॉर्ड बोली कहंती हां रिकॉर्ड बोली सेटा को कहंती नेक्स्ट how many relations may exist between tables in database रे केते प्रकार रिलेशनशिप रखा जाई पारे ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी कोटा राइट आंसर सर ऑप्शन ए होबो ऑप्शन ए चारि प्रकार रिलेशनशिप नहीं सर ऑप्शन बी सी ऑप्शन ऑप्शन बी ना ऑप्शन ए ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तीन प्रकार रिलेशनशिप रखा जाए कौन कौन वन टू वन रिलेशनशिप मेनी टू मेनी रिलेशनशिप दुईटा गला आ गोटेला मेनी टू वन और वन टू मेनी और मेनी टू वन सेटा हो गोटिए कथा तेनु करी सेटा कंफ्यूज करिया पे त मु चारटा देछि चारिटा इज रॉन्ग तीनटा ही रिलेशनशिप रखा जाए ओके नेक्स्ट व्हिच डाटा टाइप इज बेटर टू यूज फॉर स्टोरिंग प्राइस ऑफ एन आइटम गोटे आइटम रो प्राइस को हम स्टोरिंग करबा खोले को प्रकार डाटा टाइप ता असेस रे असाइनमेंट करबाटा होछ अधिक सुइटेबल सर ऑप्शन डी करेंसी ऑप्शन डी करेंसी इज द राइट आंसर करेंसी ता ही होछ अधिक सुइटेबल ओके नेक्स्ट इन एमएस एक्सेस हाइपरलिंक डाटा टाइप कैन स्टोर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे हमर हाइपरलिंक डाटा टाइप को कहीं यूज करा जाए Microsoft Access is again मेल एड्रेस ऑप्शन A बी सर option B email address बी option B email address सी C पांच मोटर लागुची सबुतिक यूज करा जाए हाइपरलिंक मींस लिंक्स टू अनदर डॉक्यूमेंट और अनदर फाइल माने वेब एड्रेस सहित भी लिंक रखा जाय परिबो ईमेल एड्रेस सहित भी लिंक रखा जाय परिबो
बा कोनोसी फाइल सहित भी लिंक रखा जाई परिबो ताले ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर सब किछि आमे डाटाबेस रे एगुडा को रखि परिबा नेक्स्ट The dash is a wildcard character that represents one or more characters. या भितर कोटा गोटे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जहा कि एक बा ताठो अधिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करिथाय क्वेश्चन मार्क आस्ट्रिक एक्सक्लेमेशन मार्क एंड डॉलर साइन क्वेश्चन मार्क ना तमे बेले बेले देखिथिबो तमे जदी केबे मोबाइल रे भी सर्च करथिबो आस्ट्रिक पकेई करंदी आस्ट्रिक डॉट आस्ट्रिक जहा कि से रिलेटेड कैरेक्टर गुडा को सर्च कर देई पारे आस्ट्रिक मार्क को ही यूज करा जाय नेक्स्ट ऑप्शन सी हबो हां आस्ट्रिक इज द राइट आंसर व्हिच इज नॉट एन ऑप्शन फॉर फिल्टर ऑन द टेक्स्ट फील्ड एमान को भितर कोटा गोटे टेक्स्ट फील्ड रे फिल्टर कला बेले न थाए ऑप्शन बी ऑप्शन ए नो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बिगिन्स विथ मने करो गोटे ना न तमे आरंभ एस लेटर रु का ना आरंभ होची बिगिन्स विथ अछि ना एस लेटर दबा पई अछि कंटेन्स माने धरिनियो ना रे अछि मिश्र कहार मिश्र अछि खोजिबा पई कंटेन्स जगह रे मिश्र लिखि देले जहार जहार टाइटल रे मिश्र थाए ताको खोजि कि दिए एंड्स विथ को लेटर रे सरुची एटा भी थाए बिटवीन टा न थाए बिटवीन टा नंबर रे थाए इतिक रु इतिक संख्या भितरे कोठी अछि हां तो बिटवीन टा टेक्स्ट भितरे न थाए ओके नेक्स्ट व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू मूव द लास्ट रिकॉर्ड ऑफ ए टेबल गोटे टेबल रो लास्ट रिकॉर्ड को जिबा पई आ गोटे डाटाबेस रो लास्ट को जिबा पई को की को यूज करा जाय ऑप्शन सी कंट्रोल होम वाला आरंभ को जिबा पई मु कहै लास्ट रिकॉर्ड को जिबा पई कंट्रोल एंड इज द राइट आंसर हां ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ता द्वारा हमें गोटे डाटाबेस रो लास्ट को जाई परिबा बी A dash is a major database object used to display information in an attractive, easy to read screen format. एमान को भितर कोटा database रो डाटा गुडा को गोटे सुइटेबल वे रे गोटे अट्रैक्टिव वे रे इजी टू रीड स्क्रीन सहज रे पढी हबो सहज रे जानि हबो एई सब पई यूज करा जाय ऑप्शन सी ए सर ऑप्शन ए फॉर्म ना फॉर्म नहीं डाटाबेस रो डाटा को अट्रैक्टिव वे रे देखिबा पई इजी वे रे डिजाइनिंग करिबा पई स्क्रीन फॉर्मेट नबा पई की हबो ऑप्शन ए तो नुहे ऑप्शन सी रिपोर्ट इज यूज्ड टू व्यू एंड प्रिंट आवर डाटाबेस डाटा इन ए अट्रैक्टिव वे रिपोर्ट को व्यवहार करा जे देखिबा पई भी एंड प्रिंट करिबा पई डाटाबेस डाटा को गोटे अट्रैक्टिव वे रे तो रिपोर्ट इज द राइट आंसर ओके तो आहुरी क्वेश्चन तो रही जाउची तो हमें नेक्स्ट को मु असेस रो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट को तो नुहे मु करिबा असेस रो क्वेश्चन आहुरी सुंदर भाबे करिबा आ किछि क्वेश्चन बट आज जो मु क्वेश्चन गुडा का असेस रो नै कि आस्थिली बेसिक जिंस निहाती भाबे माइक्रोसॉफ्ट असेस को के प्रैक्टिस करो माइक्रोसॉफ्ट असेस को बहुत गुडा क्वेश्चन आछि कारण एग्जाम रो ऑलरेडी से मेंशन करि दउथिबे जे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट असेस इंटरनेट फंडामेंटल ये सब किछि आसीबो क्वेश्चन पैटर्न जे कोन टॉपिक रो भी डिजाइनिंग करि परंती असेस रो भी करि परंती वर्ड एक्सेल रो भी करि परंती कोन निर्दिष्ट टॉपिक रो ही पारे सब तो मिसै की भी पारे किंतु मु किछि एग्जाम देखिछि जोथरे कि 20 मार्क्स रो 18 मार्क्स रो 20 मार्क्स पर्यंत केवल असेस रो क्वेश्चन आस्थिला तो सेति पे मु डिसाइड करले आज रो क्लास को असेस रो विषय रे किछि डिस्कशन करिवा पई मु निश्चित जानू छी तो एटा डिफिकल्ट लागुतिबो मु देखिबा केबे कांसेप्ट को नेकी तार किछि डिस्कशन भी करि देबी असेस रो बेसिक करबे हां बेसिक किछि मु डिस्कशन करि देबी एंड तार विजुअलाइज भी स्क्रीन गुडा भी तुम देखै देबी केमति कोन करा होची तो सेटा हे गेले भाबुची माइक्रोसॉफ्ट असेस तुम क्लियर हे जाई परिबो ओके दिस क्लास इज ओवर फॉर टुडे एंड वी मे मीट इन द नेक्स्ट क्लास ऑन मार्च थैंक यू ऑल